Hello friends, welcome again in my YouTube channel. I'm here to telling you that the different sound of I. In previous videos, I have already told about the sound of A and E. Now the time is the third sound of I. So there are different sounds of I. You can see here, if any word, किसी भी word में अगर I आता है तो कौन कौन से ध्वनियाँ, कौन कौन से sound phonetics होते हैं, आप देख सकते हैं. अगर आप किताब पढ़ते हैं उसमें अगर ऐसे साउंड आते हैं तो आप मैच करके अपनी रीडिंग स्किल बढ़िया कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. जैसे अगर छोटी की आवाज आए, जस्ट लाइक पिन 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 kick. Here you can read it, pit, pit, tin, tin, kit, the sound of shorty. When the longy, like bite, kite, time, sight, and so on. You can learn, you can read the sound of I when when add combine these letters in any word like I, bite, kite, time, sight. And the next is a. What is sound of a? With the help of I, that are like firm, firm, first. You can see here the different combination are in these words. Like after I, two consonants. After I, three consonants. There can maybe the different sound by making with the help of I. Firm, first. Firm, first. One other I. When you read, when anytime you read belonging I. When high, fire. You can read these words like this: high, fire, high, fire. Along with साथ में बोलिए fire, high with the sound of I. These are the different sound with the combination of with the I vowel letter. So that's all for today. You can learn, you can read. अगर आप इसको पढ़ेंगे तभी आप बोल पाएंगे, तभी आप पढ़ेंगे और तभी बोल पाएंगे. प्रैक्टिस से आप अपनी रीडिंग स्किल इंग्लिश में और डेवलप कर सकते हैं. ओके, जुड़े रहिए. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वोवेल लेटर्स के साथ. जो है आई के बाद ओ एंड यू भी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा. थैंक यू फॉर द डे. ओके, बाय बाय.